Hello students and welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni and today we are going to start a new chapter of organic chemistry, that is mechanism of organic reaction, that you might have read in the first year of your bachelor's. Correct. So we'll be proceeding with a few topics as mentioned in the contents over here. So you are going to see what is arrow notations, the types of bond fission, reagents and substrates, types of reagents, types of organic reactions, energy considerations. Then comes the main part of the chapter, that is reaction intermediates, including carbocation, carbanion, your free radicals, carbenes, nitrines, and the last topic would be assigning formal charges on intermediates. So these are the topics that we are going to take up in this particular chapter series in detail. So proceeding with the introductory portion of this chapter, let's see what is reaction mechanism all about. Reaction mechanism, it is a detailed step-by-step description of chemical reaction showing us how your reactant is getting converted to product. What they are trying to say is step by step how your reactant is getting converted into product. It includes very several descriptions, right? And what are those stepwise descriptions are collectively known? They are collectively known as reaction mechanism. Okay, so I hope the definition is quite clear to you, that the step-by-step detailed description of a chemical reaction showing us how your reactant are converted to product is called reaction mechanism. So that is the definition of reaction mechanism. And proceeding further to another topic, that is arrow notations in organic reaction. Correct. So now we are going to talk about the arrow notation. But before proceeding further, I would like to make a request to you all that please, while you are watching any video related to organic, be it organic, inorganic, or any subject related to science, you must prepare, you must have a habit of preparing notes. It's not just about science, it's about arts as well, because if you are preparing for any sort of high competitions, you should know that making an notes is a art, right? So that is what you need to keep in mind while watching these videos. So proceeding further to the next topic, that is arrow notations. So अब हम बात करेंगे कि what are exactly arrow notations, और arrow notations का मतलब है कि कौन सा arrow क्या represent कर रहा है आपके organic chemistry में. So you know that organic reaction includes the making and breaking of covalent bond. एक जगह अगर covalent bond टूटेगा तो दूसरी जगह कुछ ना कुछ आपके पास बनेगा. For example, let's take this example of ethene reacting with the dibromide gas. It results into the formation of something like this. So this pi bond has been broken down to form a product like this. This is just an example to make you understand that what is happening. The pi bond has been broken and it results into the formation of this new sigma bond between CH2 and Br. So there is occurring, making and breaking of covalent bond. That is one thing about it over here. And talking about the covalent bond, you can see clearly that the covalent bond has been represented by a dash like that. And the movement of electron is shown by a curved arrow, something like this. So that is the curved arrow which is going to show you the two electron movement. We will be taking up that in detail in the next slide for sure. And pardon me for the traffic noises that you are hearing in the backside. I can't ignore that as of now because I'm not having solid noise cutter as of now with me. So you have to bear it along with me, and I'm really sorry for that. But as long as I'm getting good views and good, response in my content, then definitely one day or another I'll try to make more improvement with my upcoming videos. So proceeding further, okay. So what I was saying is that this curved arrow, this over here, is showing the two electron movement. That means that the complete two electrons are moving on one side. That is what you can say, right? So that is one thing. I'm just trying to show you this, not in this example exactly. This is signifying the two electron movement, right? We'll see the examples as well in the next slide. And the movement of single electron, on the other hand, is shown by fish hook arrow that you can see. That is half-headed arrow, something like this. So what were these arrows? Okay, so as I said that this complete arrow is signifying the two barbed arrows signifying the two electron movement, and the single curved arrow or a single barbed arrow is showing the single electron movement. For example, let's see the examples over here. You'll understand that better. Over here you can see the example of ethene reacting with H positive, that is proton. How exactly is this reaction occurring?
is that you can see over here, the two electrons, this pi bond is made up of two electrons, is transferring both its electron to CH2, resulting into the formation of something like this. Okay, and it will now become electron rich, and this will become electron deficient. Now what will happen next is that this proton will be taken up by this nucleophile. That means the nucleophile is going to attack the electron deficient species, resulting into the structure something like this. So that is showing the two electron movement, right? And over here you can see that half-headed arrow has been used, which signifies the movement of one electron only, and your one electron from your methyl radical and one of the radical from your chlorine is resulting into the formation of this particular compound, that is CH3Cl. So this is how you talk about half-headed and double-headed arrows. Proceeding further, so now let's just talk about what is the tail of an arrow in this particular symbol is signifying. The tail is signifying over here that is that the side from which the electron pair has to move. For example, let's just say that this is the side from where it is moving. The electron is moving from which side? From this side. So the side from where the electron is moving has been shown by the tail, and this arrow has been showing the side where the electron is moving. मतलब ये tail क्या indicate कर रहा है कि कहाँ से electron चल रहा है, और ये arrow क्या represent कर रहा है कि कहाँ पे जाके उसकी movement रुक रही है. So that is one thing about it. And proceeding further, this double-headed arrow that you can see is not as such showing any of the electron movement, but they are used to separate various canonical structures, as you can see in this particular picture over here. So yeah, that's about your arrow notations in organic chemistry. Now we'll proceed to the next topic, that is type of bond fission. Alright, so we'll just discuss about bond fission. As you have already known in the previous slide as well, that organic reaction occurs through making and breaking of bonds, right? So there are basically two ways in which you can see the breaking of your covalent bond, and those two ways are, first of all, homolytic, जिसे आप symmetrical cleavage भी बोलते हैं, symmetrical cleavage, and another one is your unsymmetrical or heterolytic fission. So we'll be taking up both this kind of fission one by one in detail along with its respective examples. So the first one is your homolytic fission. What is exactly happening over here? You can see in this particular picture that, for example, let's just say that this there is a compound, that is AB, made up of this covalent bond having and the bond is made up of further these two electrons. Now what will happen, as the name suggests, symmetrical fission. What will happen, that each electron will be shifted to the respective atom in a symmetrical fashion, resulting into the formation of the free radicals. मतलब क्या है कि अगर आप अपना day to day life का अपने example ले लो, for example, like your forefather has been dividing up your land of property among two brothers in a symmetrical manner, so that दोनों भाइयों के पास एक ही level का, like एक ही equal level का land distribute हो गया है, so that there is no chaos created between them. So which is why आपके इसी तरह आप इसका example ले सकते हो, that is the example of your A, B compound over here, कि दोनों के पास equal number of electrons share हो रहे हैं, जा रहे हैं, divide हो रहे हैं, in a way resulting into the formation of free radicals. Okay, तो चलते हैं आगे. And in a way, if you find me very fast, I request you to just lower down the playback speed of the video. But I have to be fast because I have to finish a set of particular topics in this particular video session. So yeah, bear me. Okay. So proceeding to the next topic is our same topic is our heterolytic fission. So पिछले केस में आपने देखा था कि दोनों के बीच में इक्वल लेवल की डिवीजन हो रही थी आपके एटम्स के बीच में. यहाँ पे क्या होगा कि एक एटम जो है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों ले लेगा, एंड इट विल एंड अप फॉर्मिंग द रिस्पेक्टिव केटाइन एंड एनाइन. फॉर एग्जाम्पल, डे टू डे लाइफ का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपका एक भाई ज्यादा शातिर है, ज्यादा चालाक है, और दूसरा भोला भाला है, तो वो क्या कोशिश करेगा? वो कोशिश करेगा कि अपने भोले से ब्रदर से वो एनी हाउ उसकी प्रॉपर्टी भी हटिया ले. फॉर एग्जाम्पल, जो उसका लैंड भी है वो भी अपने दाम कर ले, एंड इन अ वे पिछले वाले को डिफिशिएंट कर दे प्रॉपर्टी और लैंड से, एवरीथिंग.
ठीक है, तो वही चीज होगी कि बी ने क्या किया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लिया, एक्वायरिंग द नेगेटिव चार्ज, एंड नाउ द प्रीवियस वन, द A atom has been left with no such electrons and it is now electron deficient. और अगर आपने अदरवाइज केस ले लिया कि A आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा एक्वायरिंग नेगेटिव चार्ज, एंड द प्रीवियस वन लेफ्ट atom would acquire the positive charge. So likewise you can see that heterolytic and unsymmetrical fission is leading to the formation of your ions. Now we'll talk about reagents and substrate. So होता क्या है यहाँ पे, see reagents are the one which are more reactive reactant, right, and the substrates are the less reactive reactant. For example, x plus y is equal to z plus w. Okay, तो ये जो reactant है आपके पास, मान लो x reactive जो है वो ज्यादा मोर रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका रिएजेंट, ठीक है, और दूसरा जो है y वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो वो क्या हो गया आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। और सबस्ट्रेट को पहचानने का एक और तरीका है आपके पास कि ऐसा रिएक्टेंट जिसके पास कार्बन एटम है और उसके जो कार्बन एटम्स में देयर इज अकरिंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली, that is your substrate, my dear friend. In the first example you can clearly see that ethene is a substrate. Why is it so? Because the pi bond between them is breaking and it results into the formation of something like this. So which is why this is a substrate, and the bromine is acting as a more reactive reactant, that is your reagent. So there is another example that you can see on your respective slide. So yeah, that you can also note as well. So let's proceed further about the type of reagents that we are going to see. So there are several kind of reagents that you are going to see, but we are just going to talk about the two most important ones: electrophile or electrophilic reagents and nucleophile or nucleophilic reagents. So talking about these two in detail, let's talk about nucleophile versus electrophiles. Nucleophiles are nothing but nucleus-loving species, typically having negative charge, while your electrophiles are electron-loving species having positive charge. That is the first difference between these two. Okay. And another thing about nucleophile is that it is having a non-bonded electron pair available for making a new bond. So जो nucleophiles है उनके पास electrons की availability होती है so as to result into the formation of a new bond by donating its pair of electrons to an electrophile as such. Okay. So ये है आपके पास कुछ examples जो हम अपनी next two slides में भी देखेंगे डिटेल में. And as I told you, the important thing to remember about nucleophile is that it provides electron for making of a new bond. Okay, and while talking about electrophiles, they have electron withdrawing groups EWG that puts a partial positive charge on an atom. Okay, so electrophiles क्या हो गए हैं आपके पास कि इनके पास आपके पास पॉसिबली क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच देगा और जो पीछे बचा कार्बन होगा उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हो. ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और पिछले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा. ठीक है, दे हैव बेसिकली पोलराइजेबल पाई बॉन्ड्स इन इट, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल माय डियर फ्रेंड. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स दैट अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं. ठीक है, चलते हैं आगे. So these are some examples that you can note down in your respective notebooks. And yeah, proceeding further, let's just discuss about the types of electrophiles. So basically there are two types of electrophiles. First one is your positive and another one is your neutral electrophiles carrying no charge at all. So ऐसे electrophiles जिनके ऊपर आपके जो electron deficient हो और उनके ऊपर positive charge हो, वो positive electrophiles हो गए. Here are the examples that you can note down. And neutral electrophiles कौन से हो गए, जिनके जो definitely electron deficient है but they doesn't carry any charge, they are neutral. So there are free radical, carbene, nitrines, boron trifluoride, then aluminium chloride, then ferric chloride, then stenate chloride, SnCl4, they all are the example of your neutral electrophiles. So talking about the nucleophiles, similarly they are divided into two categories as well. First one is your negative electrophiles, second one is your neutral nucleophile. Oh, I guess I have written that wrong. That is negative neutrophiles. So I by mistakenly have written it wrong. Pardon me for that. So nucleophile is divided into two types, that is negative neutrophiles and another one is neutral nucleophiles.
ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड एज वेल, दे आर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स. ओके, और ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास डेफिनेटली अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट देयर आर जीरो, यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, विच इज व्हाई दे आर न्यूट्रल. ओके, so these are the respective examples of the same that you can note down in your notebooks. So proceeding to the next topic. So before proceeding to the types of organic reaction, I would like to tell you something about the nucleophile, how you can expect questions in your paper, in your exams, final year semester exams of bachelor's, that you can get questions related to electrophilic and nucleophilic reagent, the difference between the same. Someone can ask it in 1 marks as well, someone can ask it in differentiating manner as well. So you should mention everything about it, that your electrophiles, they are electron deficient, they act as Lewis acid, they accept electron pair, and similarly you can also talk about your nucleophilic reagent as well, that they are electron rich, they act as Lewis bases, they donate electron pair to substrate. So you have to tell all these things in the respective topics. So talking about the types of organic reactions that we are going to take up in detail. First one is substitution, then comes addition, then elimination, condensation, rearrangement, isomerization and pericyclic. So total of 7, which is not so small topic at all. So let's start with the substitution reaction first of all. Okay, wait a minute. Okay, so starting with it, let's see what the substitution means at all. So substitution reaction is that which involves the direct replacement of an atom or group of atoms in an organic molecule by another atom or group of atoms without any change in the remaining part of the molecule. So what is happening over here? You can see clearly that the incoming group gets attached to the same carbon to which your leaving group or outgoing group was attached. For example, मान लो कि आपका कोई भी ग्रुप है जो इनकमिंग ग्रुप है, that is X, it is getting attached to the this particular atom to which your this leaving group is attached. तो उस तरह की रिएक्शन को आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल क्या मतलब है कि B के प्लेस पे आके सब्स्टिट्यूट हो गया आपका X, ठीक है. सो दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब आप 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, electrophilic substitution reaction and free radical substitution reaction. So let's talk about all these 3 one by one. First one being nucleophilic substitution reaction, जहाँ पे आपकी substitution carry out हो रही है due to your nucleophiles. Over here you can clearly see the example of OH negative, which is acting as a nucleophile having a lone pair of electron, donating its lone pair of electron to the atom to which the leaving group is attached. That is over here. You can see that is the case of your R alkyl and X halide. So OH negative क्या करेगा आपके electron deficient alkyl group पे attach करेगा. Why it is electron deficient? Because halide ion is electronegative, right? So being electronegative क्या करेगा, वो electrons को अपनी तरफ खींचेगा, pull करेगा, and it will acquire partial negative charge. So it is already your alkyl group is already carrying partial positive charge over here, making it electron deficient, और OH negative इस पे अटैक करेगा और वहां से आपके इस X halide atom को push मिलेगा to get itself removed from this particular alkyl halide, resulting into the formation of alcohol, and X negative halide ion is removed as such. So this is an example of nucleophilic substitution reaction where substitution is brought about by nucleophiles. So that is nucleophilic substitution reaction, and here you can clearly see the example of the same. Talking about electrophilic substitution reaction, what is happening exactly? That this is a case where your substitution reaction is brought about by electrophiles. Alright, so you can see this example over here which will be giving you the clear perception about electrophilic reaction. So this is the benzene that is present over here having electrons availability in it in the form of pi bonds, and what will happen that it will attack, the pi electrons will be attacking this nitronium ion, that is your electrophile, resulting into the formation of this particular intermediate. Now what is happening? Is the reaction complete? No, the aromaticity of the ring has been lost, and if the aromaticity of the ring has been lost, what will happening? Aromaticity of the ring is lost, making it unstable. So this is quite unstable structure that has been provided to you,
And again, I am apologizing you for the bad noises of traffic that you have been listening in the middle of the video, which is disturbing the great session of this particular lecture. And I am again really very sorry for the same, but you have to bear it in this lecture as of now, because I'm recording it in the noon timing, which is why you are listening the noises. So yeah. Alright, so after undergoing nitration, it results into this structure, which results into the loss of aromaticity of the ring, making it unstable. So as to regain the aromaticity, this particular electron deficient carbon will accept electrons from this H bond, H bond, that is from this CH covalent bond, resulting into the formation of this nitrobenzene, and the aromaticity of the ring has been regained by the loss of one proton. So that is how you can talk about electrophilic substitution reaction, जहाँ पे electrophile की वजह से आपकी substitution reaction देखने को मिल रही है. You can clearly see कि नाइट्रोनियम आयन जो था, जो electrophile था, वो जाके substitute हो गया बेंजीन पे, ortho position पे जाके. So that is one thing about electrophilic substitution reaction. Okay, so proceeding to the next part of the substitution reaction, that is the third and last part. That is free radical substitution reaction, and you can clearly see that we are just discussing the first reaction right now. That is a substitution reaction, and we have discussed its sub-parts. So organic reactions are very longer, and you have to be with me till the end of it if you need to understand every topic in detail. Okay. So let's talk about free radical substitution reaction. Substitution reaction brought about by free radicals are called free radical substitution reaction. अब ऐसे substitution reaction जो आपके free radicals की वजह से हो रही है, वो आपको देखने को मिलेगी free radical substitution reaction के केस में. अब देखो होता क्या है. Let's talk about the mechanism in it, that is free radical mechanism only. There are three steps in the mechanism: initiation, propagation and termination. Initiation में आपके पास क्या है, जो आपके पास डाइक्लोराइड गैस यहाँ पे यूज हुई है, उसकी होगी होमोलिटिक फिजन. ठीक है. होमोलिटिक फिजन के बाद आपके पास क्या मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इसने ले लिया, इक्वल बंटवारा हो गया इलेक्ट्रॉन का. ठीक है. तो दो इलेक्ट्रॉन थे, दो में से एक दोनों ने ले लिया. इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू क्लोरीन फ्री रेडिकल्स. नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोपगेशन, जो आपके पास मीथेन अवेलेबल है, मीथेन के साथ रिएक्शन होगी आपके एक क्लोरीन फ्री रेडिकल की. इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस methyl free radical and HCl. So one of the product, the side product, you can clearly see that has been obtained in the first step of propagation. In another step of propagation, this methyl free radical is going to react with again the gas that we have available over here, that is dichloride gas, resulting into the formation of methyl chloride. Another product has been obtained, and one of the free radical of chlorine is clearly seen. Now this chlorine radical and one of the chlorine radical that has been left over here will form a bond together, resulting in the formation of dichloride gas. So that is one thing. And the methyl radical which has been left in the previous step of propagation will react with another methyl radical, resulting into the formation of ethane. So there are three steps in total that you have seen. In the first step, what you have seen, that the homolytic fission of chlorine dichlorine is occurring, resulting into the two chlorine free radicals. Now one of the chlorine free radical is reacting with methane, forming one methyl radical and one of the side product HCl. Now methyl radical will reacting with dichloride gas again, resulting into the formation of another main product, that is methyl chloride, and Cl radical has been removed as such. Now this Cl radical and one Cl radical that has been left in the previous case and the previous step will react together to form dichloride gas, and two methyl radicals are reacting together to form another molecule, another compound, that is ethane. So that is all about the free radical mechanism. I hope that is quite understandable to you, and if it is not, you can repeatedly listen this video for better understanding. So proceeding to the next slide, and the next kind of reaction, that is the second kind of reaction that you will take up in detail, that is addition reaction. So earlier आपने substitution reaction के बारे में देखा, जिस तरह उसमें न्यूक्लियोफिलिक, आपको इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल के केसेस देखने को मिले, सेम आपको एडिशन रिएक्शन के केस में भी देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली ऐसी रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्विंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स व्हिच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, उसको आप बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट. यानी कि दो रिएक्टेंट्स की एडिशन होकर आपको जो एक प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको आप बोलोगे एडिशन प्रोडक्ट. ओके.
So that is the definition of these particular reactions, and such kind of reactions we are going to observe in multiple bonds, that is triple and double bonds. First type of addition reaction is nucleophilic addition reaction. ऐसी addition reaction जो आपकी nucleophiles की वजह से हो, they are nucleophilic addition, and basically आपके aldehydes और ketones में आपको देखने को मिलती है, right? So you can see in the first example, this nucleophile OH negative is attacking one of the compound HCN, likewise resulting into the formation of water, and cyanide is removed as such. So what is happening? That OH is getting added to this hydrogen and resulting into the formation of this water. So addition product आपके पास यहाँ पे बना water. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे किसका, कीटोन का, because these reactions are typically of aldehyde and ketone. तो होगा क्या कि ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, ठीक है, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा कार्बन के कंपैरिजन में, मेकिंग योर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अब इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे जाके अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल. तो जो एडिशन प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा ना बच्चा, वो ये मिलेगा कीटोन साइनोहाइड्रिन. आई होप यू नो दैट हाउ इट इज फॉर्म्ड, बिकॉज जो H पॉजिटिव आपके पास रिएक्शन में रह गया था कि O नेगेटिव उसके ऊपर जाके अटैक कर देगा और अपना प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट करके ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको दे देगा कीटोन साइनोहाइड्रिन. ओके, I hope it is understandable. Proceeding further to the next type of addition reaction, that is the addition reaction which is brought about by electrophile, known as electrophilic addition reaction. Basically आपको alkenes और alkynes में देखने को मिलती है ये. जैसे कि आपने एग्जांपल देखा यहाँ पे प्रोपाइलिन का, होगा कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा and it will result into the formation of H positive. Now why this is happening? So okay, we'll discuss it by opening it. Okay, so it is something like this. And let me change now the color of the pen for better understanding. Okay, now these pi bonds are shifted over this carbon supposedly, and now what will happen? This will make it look like something like this. Okay, yeah, right. So now the hydrogen will get shifted to this particular negatively charged CH2 group over here. Why it is happening? So because hydrogen itself is electron, H positive itself is electron deficient, उसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इससे जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा CH2 नेगेटिव पे जाके, ठीक है, मेकिंग दिस CH3. अब आप बोलोगे कि मैम why the electron movement has been occurring on this side and why not on the other side? The reason is that because this leads to the formation of secondary carbocation that you can see. एंड अगर आप अदरवाइज करते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मूव करते हो, प्रीवियस वाले को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दिखाते हो, तो आपके पास मिलेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी. सो विच इज व्हाई आपका सेकेंडरी बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और इसीलिए आपने इस तरह से मूवमेंट दिखाई है. ओके, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की. क्लियर है? अब हो गया ये एक चीज. अब ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपके पास बना है, यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा Br नेगेटिव जाके इस पे अटैक कर देगा और आपके पास आपका एडिशन प्रोडक्ट इस तरह से आपको मिल जाएगा. सो आई होप दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती थी इसकी. सो प्लीज लिसन टू इट वंस मोर केयरफुली. Proceeding to the last part of addition reaction, that is free radical, and the addition reaction which is brought about by free radical are known as free radical addition reaction. फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे प्रोपीन की रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन प्रोमाइल ब्रोमाइड. अब आपको याद होगा आपने अपनी +2 में पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ा था, खराश इफेक्ट पढ़ा था, और इसी को क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था. अगर याद होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो वेरी बैड, बट स्टिल आई एम हियर टू टेल यू. सो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता था कि जो नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग रिएजेंट का, वो कहाँ जाके लगेगा, टू द कार्बन कैरिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अराउंड द अनसैचुरेटेड बॉन्ड. तो वो कौन है, ये इसके कंपैरिजन में इसमें हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए ब्रोमीन वहां जाके लग गया, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट इन द प्रोडक्ट. ओके, अब बात करेंगे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, वो तो हमने कर ली. अब बात करेंगे हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की, इसी केस में, इसी रिएक्शन के लिए. तो बेटा जो यहाँ पे पेरोक्साइड अवेलेबल है, सबसे पहले आप इसकी कर दोगे होमोलिटिक क्लीवेज, कर दी, ठीक है. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 अल्कोक्सी फ्री रेडिकल. अब ये एक अल्कोक्सी फ्री रेडिकल जो बनेगा वो आपका HBr के साथ रिएक्ट करके आपको दे देगा अल्कोहल. कैसे? बिकॉज ये आपके पास RO था, RO रेडिकल, और ये था HBr.
अब एक रेडिकल H ने ले लिया, एक Br ने ले लिया, तो H का जो रेडिकल है वो RO के रेडिकल के साथ इंटरेक्ट करके आपके पास ROH दे देगा अल्कोहल, और एज सच आपके पास Br रेडिकल रह जाएगा, यू कैन क्लियरली सी। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल। देन सेकंड इज प्रोपेगेशन। अब क्या होगा, जो आपके पास मेन सबस्ट्रेट था दैट इज प्रोपीन, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ब्रोमीन फ्री रेडिकल एंड दिस इज गोइंग टू बी द स्लोएस्ट स्टेप। अब आपके पास जहां से सेकेंडरी रेडिकल बनता है, आप उसको उस तरफ अपने पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो कर दो, बिकॉज लाइक योर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसलिए आप सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाओगे इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्राइमरी रेडिकल। ओके, ठीक है, अब ये हो गया एक बात। अब ये आपके पास बन गया आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, दैट इज सेकेंडरी रेडिकल, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन आप फिर से कराओगे HBr के साथ, और इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ this particular N-propyl bromide as per Kharash effect, as per Markovnikov rule, and as per clearly you can see where the radical is present, तो वहां पे जाके आपका H positive लग जाएगा, it results into the formation of this. So again Br negative Br radical निकल गया। अब ये वाला Br radical और ये वाला Br radical आपस में रिएक्ट करके आपको दे देगा Br2 as such. So this is the free radical mechanism that you can see. And it was just as similar to your previous electrophilic free radical previous free radical substitution reaction mechanism. तो आप उससे भी देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा इजीली। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो बेटा, व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन एग्जैक्टली इज दैट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इज देयर इज अकरिंग द लॉस ऑफ 2 or more groups of atoms. You can write it down, loss of 2 or more atoms or group of atoms or group of atoms from the same or adjacent atoms of a substance leading to the formation of a multiple bond. So that is the definition of your elimination reaction. Pardon me for my bad handwriting as of now, because I'm trying to make this video faster as possible. And yeah, so what is happening in the case of elimination reaction? There is a loss of 2 or more atoms of a group of atoms from same or adjacent carbon of a substance leading to the formation of a multiple bond. तो अभी हम समझेंगे इसको एक एक करके। आपके पास तीन तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तीनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आई होप आपने डेफिनेशन लिख ली है। और दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट वन, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां पे आपके पास जो लॉस है एटम और ग्रुप का, इट अकर्स फ्रॉम द सेम एटम ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये है आपके पास क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3। तो होगा क्या, अब अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा, जब आपके इस OH नेगेटिव में विच इज नाउ एक्टिंग एज अ बेस ओवर हियर, ये क्या करेगा, बेस अब अपने प्रोटोन को करेगा अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट करके वाटर बना के वो निकल गया। लेकिन अब क्या होगा, प्रोटोन यहाँ पे निकल गया, तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है CH के, ये शिफ्ट हो जाएंगे आपके कार्बन पे। And now what will happen next is that after this particular fluorine atom will getting a push to get itself removed as a good living group. तो ये निकल गया, और आपके पास जो पीछे रह गया दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। और ये जो डाइक्लोरोकार्बीन आपके पास बना है, इट इज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑफ योर कार्बाइला अमीन रिएक्शन, जो आपने अपनी +2 में पढ़ी है। दिस इज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑफ कार्बाइलामीन रिएक्शन और रीमर-टीमन रिएक्शन। ओके, so that is how you can say that is alpha elimination। अल्फा कैसे होगी, बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन लगा है, इसके साथ ये कार्बन है। ठीक है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, और इसी के ऊपर से जो हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा है, वहीं पे आपके पास रिमूवल हो रहा है आपके क्लोरीन एटम का। सो दैट इज वन थिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो अल्फा पोजीशन से ही रिमूवल हुई, तो अल्फा पोजीशन पे ही आपके पास आपको मिल गई अल्फा एलिमिनेशन इस केस में। अच्छा बच्चे, अब ये केस था आपका बेस कैटेलाइज्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। द एग्जांपल यू कैन राइट इट डाउन, base catalyzed dehydrohalogenation
of chloroform. Okay, so this is the example of alpha elimination. Another one is your beta elimination, जहाँ पे जो loss हो रहा है atoms का वो beta position से हो रहा है. Now let's see one by one by taking the example of acid catalyzed and base catalyzed. पहले acid catalyzed की बात करते हैं. जब आपने catalyzed acid को लिया है तो आपके पास आ गया concentrated H2SO4, मतलब वो क्या कर रहा है, प्रोटोन रिलीज कर रहा है, H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है रिएक्शन में. अब होगा क्या, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन आ गई, ये बीटा पोजीशन आ गई आपके पास. अब बीटा पोजीशन से होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके हाइड्रोजन लॉस होगा. तो होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे आपके इस तरफ शिफ्ट हो गए अल्फा पोजीशन पे, मेकिंग योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप गेट रिमूव्ड. इट विल गेट अ पुश टू गेट इटसेल्फ रिमूव्ड एज अ गुड लिविंग ग्रुप, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस इथीन. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक रिएक्शन. ठीक है, अब हम बात करेंगे बेस कैटालाइज की, जहां पे आपने KOH को लिया है, एल्कोहलिक KOH को. तो अब OH नेगेटिव एक्सट्रैक्ट कर लेगा प्रोटोन को, H2O बन के निकल गया. अब ये जो है ये अगेन शिफ्ट कर जाएगा सेंटर में, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन, एंड ब्रोमीन विल गेट रिमूव्ड एज अ गुड लिविंग ग्रुप, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ KBr. K पॉजिटिव यहाँ से है और Br इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड. तो इट इज वेरी इजी. अगर आपको प्रीवियस रिएक्शन समझ आ गई है तो इस तरह की रिएक्शंस को आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि बीटा पोजीशन से जब रिमूवल हो रहा है, so that is going to be the case of your beta elimination. अब देखते हैं गामा का केस. जब आपके पास एलिमिनेशन लॉस ऑफ एटम जो है वो गामा पोजीशन से हो रही है या अल्फा पोजीशन से हो रही है. अल्फा कैसे, बिकॉज अगर आप इस साइड से काउंट करोगे तो ये आपकी गामा होगी, अगर आप इस साइड से काउंट कर रहे हो तो ये वाला गामा हो गया. तो लाइकवाइज यू कैन से कि अल्फा एंड गामा पोजीशन से रिमूवल हो रहा है अगर इस तरह की रिएक्शन में, जिसे आप फ्रीहैंड रिएक्शन बोलते हो. This is extensively used for the synthesis of three-membered ring, something like this. So this is the case of your free-end reaction. हो सकता है आपसे कभी-कभी directly इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए. So you have to keep this it in your mind. Yeah, proceeding to the case of your 1,3-dibromopropane, what will happen? The case of gamma elimination will occur. Let me share the slide first of all. So आप देख सकते हो this is your gamma carbon. होगा क्या, अब ये जो ब्रोमीन है इसका जो CBr बॉन्ड है यहाँ पे, यू कैन सी द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस बॉन्ड विल गेट शिफ्टेड टू दिस कार्बन. क्यों, ऐसा क्यों हुआ, रुको मैं आपको बताती हूँ. बच्चा देखो, ये ब्रोमीन एक तो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश करेगा, इस कार्बन को बना देगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. इसलिए ये ब्रोमीन आपका ये जो बॉन्ड है CBr के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हुए इस कार्बन के ऊपर, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया था, रिजल्टिंग इनटू द स्ट्रक्चर लाइक दिस. तो साइक्लोप्रोपेन बन गया और ZnBr2 एसिड निकल गया. जिंक डस्ट को आपने यूज किया था एज अ कैटलिस्ट ओवर हियर. तो दैट इज द सेम केस. तो सेम चीज हो रही है सभी में कि पिछले केसेस में भी आप देख सकते हो अल्फा और बीटा एलिमिनेशन में, कि बीटा एलिमिनेशन के केस में क्या हो रहा है कि आपका O जो है अगेन इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश करेगा और इट विल मेक द अल्फा कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा आपके बीटा पोजीशन वाले हाइड्रोजन CH बॉन्ड से. ठीक है, एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इथीन. सेम चीज हो रही है हर केस में. तो एक केस समझ आ गया, बाकी सब भी समझ आ जाना चाहिए. चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन. दैट इज द आई गेस फोर्थ रिएक्शन. या सो आप खुद देख लो 7 रिएक्शंस है, जब अभी हम फोर्थ में ही पहुंचे हैं. सो हाउ मच लेंथियर दिस टॉपिक इज. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन, दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन. तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है आपके पास, देयर आर एक्चुअली 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट रिएक्टेंट, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, HCl, अमोनिया, अल्कोहल, समथिंग लाइक दैट. तो 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल सेम और डिफरेंट रिएक्टेंट के अगर कंबाइन करेंगे और एक प्रोडक्ट को बनाएंगे बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, अमोनिया, HCl and alcohol, some of the simple molecules, that kind of reaction is known as, my dear friend, condensation reaction. So here you can see the example of aldol condensation that you have clearly seen in the previous classes of yours, that is in +1 and +2. So over here you can see that the hydroxide ion, which is acting as a base, will abstract the proton, and now what will happen, this bond will this electron from CH bond will get shifted to CH2, resulting into the formation of carbanion like this. Now 2 molecules of these carbanion will react together, resulting into the formation of 3-hydroxybutanol. Let's see how it is happening. So now what is happening, these 2 molecules are reacting together. The carbanion is reacting with 1 molecule of ethanol, right? So that is what's happening. This is your acetaldehyde और ethanol. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, कार्बन को बना देगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट.
अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे जाके अटैक कर देगा ये आपका कार्बानाइन एंड इट एंड अप रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट, राइट। अब क्या होगा कि यहाँ से जब आपके पास जो आपके गिवन सॉल्यूशन में वाटर इज हैज बीन प्रोवाइडेड, तो अब क्या होगा कि इस रिएक्शन के दौरान आपका जो OH नेगेटिव है वो एज सच निकल जाएगा एंड दिस O नेगेटिव विल बी अटैकिंग दिस प्रोटोन एंड आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल वुड बी योर एल्डोल, दैट इज 3-hydroxybutynyl दैट यू कैन क्लियरली सी। So over here you can see कि ये कैसे हो रहा है, by the elimination of your OH negative, कोई ना कोई सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन हो रही है एंड यहाँ पे आपके पास एक नया प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज एल्डोल। एल्डोल में आपका एल्ड स्टैंड्स फॉर योर एल्डेहाइड ग्रुप एंड ओल स्टैंड्स फॉर दिस योर एल्कोहल ग्रुप, सो दैट इज व्हाट यू कैन सी। अब ये जो एल्डोल बनता है अपॉन योर फर्दर हाइड्रोलिसिस क्या होगा, इट विल अंडरगो not upon further hydrolysis, upon reaction dilute mineral acid, it will undergo dehydration to form alpha beta unsaturated aldehyde and ketone that you can see over here, right? It leads to the formation of but-2-enol, right? So that is the formation of protonaldehyde over here, you can see. Now proceeding to the next slide, that is another kind of reaction, that is rearrangement reaction, जहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रही है एटम्स की एक सबस्ट्रेट में टू फॉर्म अनदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अब देखते हैं वो कैसा होता है। सो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग माइग्रेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ वन और मोर एटम टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल आर कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जहां पे एग्जांपल आएगा डिहाइड्रेशन ऑफ दिस 3-methyl butane to ol विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब एसिड का काम क्या है, H पॉजिटिव को आपका रिलीज करना, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव जो रिलीज हुआ ये जाके आपका कहां पे लग जाएगा, ये प्रोटोनेट कर देगा आपके इस पर्टिकुलर सैंपल को, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस OH2 पॉजिटिव एंड दैट इज अ प्रोटोनेटेड 3-methyl butane to ol। अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपके पास बनेगा, कैसे बनेगा, अपॉन रिमूवल ऑफ दिस वाटर, पानी निकल गया यहाँ से, कैसे निकलेगा, बिकॉज O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड ऑक्सीजन इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिटेन करेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिटेन करेगा, रिटेन कैसे करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, कहाँ से, इस CH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बाहर निकल गया। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट इज समथिंग लाइक दिस, इफ दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, लेट्स से इट इज सेकंड, तो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आपके हाइड्रोजन शिफ्ट हो गए एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन दैट इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब इसके बाद आपके पास क्या होगा, now they'll be occurring the removal of your H positive ion, कहाँ से, आपके इस पोजीशन से, from this position as per your Setzeff rule। Now what does Setzeff rule state? So Setzeff rule आपका क्या बोलता है, that is that the more substituted alkene will be the more stable product। तो जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी आपके पास वो ज्यादा ही स्टेबल होगी, और टर्शरी आपके पास ऑलरेडी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड आपको देखने को मिल रही है, इसलिए इस केस में ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको भी यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। तो इस यू कैन सी द कार्बन, दिस पर्टिकुलर कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्डन मी फॉर माय वर्ड्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्या होगा, अब आपका ये जो H पॉजिटिव है इट विल एंड अप फॉर्मिंग द बॉन्ड ओवर हियर, हाउ, सॉरी नॉट, तो अब क्या होगा आपका एज पर सेट्जेफ रूल आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस H पॉजिटिव, आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दैट यू आर गोइंग टू गेट एज पर द सेट्जेफ रूल इज योर मेजर प्रोडक्ट दैट इज 2-methyl butene, ठीक है। ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड क्यों होगा, बिकॉज मान लो कि यहाँ पे तो अब आपके पास हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है ही नहीं इस कार्बन पे, ये पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके लेट मी इरेज द इंक, ओके। तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये वाला कार्बन, अब होगा क्या, हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी यहाँ है आपके पास 2 हाइड्रोजन की, ठीक है, होगी। अब क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इसमें से लॉस होगा, क्यों, क्योंकि इसके लॉस होने से आपके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, और ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज पर द सेट्जेफ रूल, ओके। तो चलते हैं आगे। So these are some of the another example of your rearrangement reaction that you can see clearly, and you can practice them in your notebooks as well। तो आप इन्हें लिख सकते हो, स्लाइड को पॉज कर लो और you can write it down as well। Proceeding further to another kind of reaction that is isomerization reaction। आइसोमराइजेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, बेसिकली एक जो आइसोमर है वो दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है by keeping the molecular formula and the carbon skeletal of the reactant and product
इंटैक्ट और सेम, ठीक है। जैसे trans-butene आपकी in the presence of light it is get converted into cis-butene. इसी तरह 1-bromobutane is getting converted into 2-bromobutane, that is the most stable one, and likewise there are several other examples as well. So talking about the second last reaction that we are actually this is the last reaction, seventh one, pericyclic reaction. तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या है, जिसमें आपके पास बेसिकली कोई भी आयनिक और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इंस्टेड इस रिएक्शन ये जो रिएक्शन है आपकी सिंगल स्टेप में होती है वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। देखेंगे हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में। तो बेसिकली यहाँ पे जो बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग है वो एक ही टाइम पे हो रही है, कॉन्सर्टेड रिएक्शंस होती हैं ये बेसिकली, ठीक है, एक वन गो में होने वाली रिएक्शन। So acids they do not require catalyst, they are initiated by heat or light, so they all are known as pericyclic reaction, जहाँ पे आपको कोई आयनिक और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट नहीं देखने को मिलता है। Instead these are free reaction, these are the reaction in which your single step and cyclic transition state are going to get seen, and bond making and bond breaking occur simultaneously. Catalyst की जरूरत नहीं पड़ती है, and that's all you can see. So first example and first kind, not example, first kind of electrocyclic reaction, pericyclic reaction is your electrocyclic reaction. होता क्या है, यहाँ पे आपके acyclic conjugated जो डाइईन्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं साइक्लिक डाइईन्स में। जैसे कि एग्जांपल है ब्यूटा 1,3 डाइईन का, that is ब्यूटा क्यू 1, 2, 3, 4, 4 carbon is ब्यूट, okay, and diene is this, the buta diene 1, 1, 3 diene, okay. तो इसकी जब आपके रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, आपके पास हीट की प्रेजेंस में कराओगे तो थर्मोकेमिकल होगी, लाइट की प्रेजेंस में कराओगे तो फोटोकेमिकल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी, ठीक है। ये बहुत डेप्थ की बात है एमएससी लेवल की, तो आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप अभी इतना ही समझ लो। जो आपका एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन है वो साइक्लिक में जब कन्वर्ट होगा इस तरह से कि जब इसके इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से अरेंजमेंट होगी कि आपके पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये प्रोडक्ट बने, दैट इज योर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। Another kind of reaction is cycloaddition reaction. Basically इसमें आपको 2 + 2 pi addition और 4 + 2 pi addition का केस देखने को मिलता है. That is all you can see. Okay, so over here you can see that your 2 ethene molecules are reacting. One is has been considered as diene, another one has been considered as dienophile, right? So that is one thing, and it leads to the formation of after the reshifting of bonds, it leads to the formation of this cyclobutene. सिमिलरली 4 + 2 रिएक्शन, पाई रिएक्शन जब आप देख रहे हो, 4 + 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ और 2 इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ, वहां पे क्या था, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिएक्शन हो रही थी। 4 + 2 में 4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की आपने इस तरह से मूवमेंट करवानी है, इट एंड अप फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, so I hope this is very much informative and quite clear to you all. So this is all about the pericyclic reaction as well, जहां पे आपको पता लगा कि आपके पास पेरिसाइक्लिक भी दो तरह की होती है, इलेक्ट्रो एंड साइक्लो एडिशन। इलेक्ट्रो में आपका एसाइक्लिक जो है वो साइक्लिक में कन्वर्ट होता है, साइक्लो में आपको दो तरह की रिएक्शन देखने को मिलती हैं, 2 + 2 and 4 + 2 pi addition pi reactions, right? So yeah, that's all about it. So I know the video is quite long, but it is actually very much informative to you all. So I would like to make a request to you all, just see to it properly, इसको देखिए, तभी जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के आपको थोड़ा बेटर समझ आएंगे, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पिछले बेस नहीं प्रॉपर करोगे तो वो भी आपको समझ नहीं आएगा। So yeah, thanks for watching, and do like, subscribe my channel, give your thoughtful and constructive comments as well. I'll try to improve in the next upcoming video, and yeah, press the bell icon for more updates. Thank you.